Hey everyone, good evening to all. Am I Yeah, good audible? evening, sir. Good evening, Madan. How are you? I'm fine, sir. Great. Hello. Hi, hi Ajay. How are you? Yeah, I'm good. How are you? Good, Ayaz. Good. Thanks for joining. Mhm. So just wait for a couple of minutes. We'll start. Okay. Sure. Yeah. All right. So welcome you all in the GuiNet Technologies, and we are going to start this SDWAN session. I hope you guys are excited for it, right? Let me do something. Just give me. Okay. Let me just. Okay. All right. So I believe we're good now. So what I was talking, the session is going to be happen in Hindi and English both. So आप लोगों को जैसा comfortable लगे, just let me know. So we can start this session in that way. So if anyone here who not understand like English, just let me know. Else the request from most of the participant session should be in the English. अगर कोई ऐसा है जिसको हिंदी नहीं आती है तो मुझे बता देना. So we'll have a discussion in the English as well. अगर सबको हिंदी आती है तो that's good, right? कोई दिक्कत की बात नहीं है. We can continue. All right. So the first of all, like this is the session. We can say the very first session, and we can say initial session of the SD-WAN, and we'll try to understand the basic fundamental of the SD-WAN. ठीक है? जो बहुत ही स्क्रैच से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि why basically SD-WAN technology has been introduced here and what was the key challenges in the past जो mitigate नहीं हो पा रहा था जिसको mitigate करने के लिए the SD-WAN has been evolved. So हम एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे. Before we can go deeper and deeper, we discuss about the lab part, right? जो हमें configuration करना है, we just have to done lot of deep dive understanding how the traffic flow is going to be happen, what is the site to site connectivity is going to happen, how the site to data center connectivity is going to happen, what are the controller, right? What are different branch locations we have. We'll discuss later stage because the first thing foundation should be very clear. अगर आप लोगों को foundation clear है, so we can understand anything. But if there is, you know, gap in the foundation and basic concept, trust me, nobody going to understand the SD-WAN technology. It's like the very unique technology, right? But totally based on your legacy routing and switching. If I'm talking about the legacy routing and switching, so if you're having the very good knowledge, right? If you are like uh, very good in terms of the how routing protocols work, right? How the BGP work, OSPF work, and even having the basic foundation, then you are going to be uh, understand this technology. So I have the message from the Kamarjit, right? And he is saying that let me
show you. So, okay, thank you so much, Kamarjit, and congratulations to you. Okay, so let me show his message, what he's trying to say, so you guys can understand. He just sent a direct message to me. So he's saying that, sir, good evening. Good evening, Kamarjit ji. I have joined the CP Technology Limited as Senior Network Engineer and Security Specialist after completing the session from you, Palo Alto, and I cracked the interview and got this opportunity. Congratulations, Kamarjit, and thank you so much for letting this know to me and the GuiNet family. And we wish you all the best for your future success. Okay, so let's continue, right? So I was talking like without going to basic concept, you cannot understand the actual requirement of this SD-WAN technology, right? It's not easy. You have to put a lot of dedication, a lot of time. You have to be very honest, right, to understand this technology. तभी आप इसको सीख पाओगे, वरना जिसको नहीं सीख पाओगे, even आप सीख भी लोगे तो it is going to be worthless for you. So let me give some kind of the idea, right, and then we'll understand. Let me open my whiteboard. So, okay, so let me clear this canvas, right? So first of all, right, if we talk about the SD-WAN, why this word itself, arrive in the market? So before SD-WAN, we have the WAN, right? Why didn't it work? Then after, there is like additional word has been added here. That is the SD, right? This is known as a software-defined wide area network. So first thing you have to understand, the WAN which we keep using in the past, जो भी हम communication कर रहे थे in WAN, right? This WAN was absolutely fine. Means कि इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो कि there was some phone. You can think about the 1990. You can think about the even around 1995 or 1998. There was a normal phones. आप लोगों ने नोकिया का फोन जरूर देखा होगा, राइट? नोकिया फोन्स आपने देखा होगा जिसमें डायल पैड हुआ करते थे, राइट? एंड देन this is also known as the phone, right? Normal phone. And one of the new phone has been arrived, which is known as the smartphone. So these both are the phone, but this is the old phone and this is the new phone, right? Similarly, if you correlate, both are the WAN. This is the old WAN and this is the new WAN. So why basically new WAN come in a picture? Why old WAN was not still serving the all requirement? Similarly, you can think why old phone is not meet all user requirement. Why smartphone come in a market? What was the requirement? So you can just think about in the phone what you can do. You can send, you can do the calling. Still, you can do that. You can do some kind of the messaging. You can do that. There is no problem. Even there was a internet. Some of the model having the internet, and you can do some kind of the in sort of the Facebook. आप यहाँ पे चला सकते हो. कोई दिक्कत की बात नहीं है. राइट, यहाँ पे कुछ कुछ आप टीवी भी देख सकते थे. यहाँ पे आप गेम भी खेल सकते थे, राइट? यहाँ पे आप वीडियो कॉलिंग भी कर सकते थे, राइट? यू कैन डू द वीडियो कॉलिंग्स एंड इवन व्हाट एल्स यू कैन डू. यहाँ पे आपका कैमरा भी था. ऐसा नहीं है कि ये फोन हमारा नॉर्मल फोन हुआ था तो यहाँ पे ये सारी चीज नहीं थी. इट वॉज देयर, बट दे हैविंग अ लिमिटेड कैपेबिलिटी लाइक कैपेसिटी. मीन्स आप कॉल तो कर सकते थे, मैसेजिंग, दिस इज द बेसिक नीड ऑफ द फोन. मैसेजिंग एंड कॉल तो फोन में होना ही चाहिए, राइट? बट सडनली स्मार्टफोन कम इन अ पिक्चर. एंड इस स्मार्टफोन में स्टिल सारे फीचर्स हैं. अभी भी कॉल्स भी आप कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम. आप इसके अंदर मैसेजिंग भी कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम. आप इसके अंदर इंटरनेट भी यूज कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट? आप इसके अंदर गेम्स भी खेल सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम. You can use the camera. So what additional we have, this phone becomes the smartphone, right? And this phone is talk as a normal phones. Yes, we having a lot of like differences if you talk about the nutsells, right?
सो क्या हमारे पास डिफरेंसेस हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। सो मैं एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं कि अगर हमारे पास नॉर्मल फोन है, सो वी कैन डू द थिंग्स बट विद अ लिमिटेड रिसोर्स, राइट। आप ऐसा नहीं कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो एक साथ। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप इस फोन के अंदर आप लाइव नेटफ्लिक्स की स्ट्रीमिंग देख सकते हो, एट द सेम टाइम आप फेसबुक चैट भी कर सकते हो, एट द सेम टाइम आप गेम भी खेल सकते हो, एट द सेम टाइम आप बहुत सारी चीजें, आप प्रेजेंटेशन भी बना सकते हो ऑफिस की, आप वीडियो कॉल भी ले सकते हो, जूम कॉल भी ले सकते हो, राइट। यू कैन डू द ऑनलाइन क्लासेस, यू कैन डू द ऑनलाइन क्लासेस। आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, ये इसमें पॉसिबल नहीं था बिकॉज द हार्डवेयर वॉज डिजाइन इन सच वे कि वो सिंपल सिंपल रिक्वेस्ट को तो कैरी कर सकता था, बट व्हेन यू टॉक अबाउट द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन मींस व्हेन यू रिक्वायर द लॉट ऑफ रिसोर्सेस, आपको बहुत सारे एप्लीकेशन का एट द सेम टाइम यूज करना है और उसकी प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होनी चाहिए, दिस फोन वाज नॉट डिजाइन टू हैंडल दोज काइंड ऑफ ट्रैफिक। बट द transitions has been started, user want more and more because इंटरनेट का हमारा जैसे जैसे हमारा पॉपुलरिटी होते गया, राइट। पीपल आर यूज टू इंटरनेट, दे मोर डिपेंड ऑन द फोन्स एंड दे वांट टू डू मोर थिंग ऑन द फोन्स। सो व्हेन दे वांट टू डू मोर थिंग ऑन द फोन्स, दैट मींस कि आपको फोन के अंदर बहुत सारी चीजें आपको डालनी पड़ेगी। इफ यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट, probably you are not going to handle those customer requirement, you are not going to transform the customer request। so ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पे थी। देन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस कम विद द सॉल्यूशन, लाइक सैमसंग आया मार्केट में एंड्रॉयड के फील्ड में, राइट। फिर उसके पीछे पीछे बहुत सारे ब्रांड्स आए जो आई एंड्रॉयड के फॉर्म में आए। सिमिलरली वी नो दैट द एप्पल कम इन द मार्केट, राइट, जो इसका अलग ही अपना सेगमेंट है, राइट। सो उसके पास भी सिमिलर काइंड ऑफ द फीचर्स लेकर आया जो स्मार्टफोन की कैटेगरी में आता है। एंड देन with a single phone they have added like the super powerful memory। जब आप लोग कॉलेज में हुआ करते होंगे, आई बिलीव इन द कॉलेज टाइम हु हैव डन द बीटेक इन 2095 और इसके अराउंड में, सो आप लोग को एक नॉर्मल कंप्यूटर लेते थे तो उसमें आपको 8 GB रैम आप लोग लेते थे, राइट। 8 GB रैम के अंदर कंप्यूटर आता था, 16 GB रैम के अंदर कंप्यूटर, जो बहुत बढ़िया एक कंप्यूटर। आज भी बहुत सारे लैपटॉप पीसी आते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन में, बट नाउ फोन्स आर कमिंग नाउ अडेज। आपके फोन्स इतने जीबी रैम के आते हैं, 16 GB रैम के आते हैं, राइट। 32 GB रैम के आपके फोन्स आने लगे हैं, इनके अंदर स्टोरेज आपको 256 GB आता है, राइट। तो यू कैन थिंक अबाउट कि जो उस समय 4 GB का हमारा कंप्यूटर आता था, 2 GB का कंप्यूटर आता था, उसी में हम पूरा गेम्स खेल लेते थे, पूरा अपना काम कर रहे थे। नाउ माय फोन्स आर कमिंग इन लाइक दिस वे। So things has been changed, right? So people are start using the multiple applications, people are start using the start doing the multitasking, and because of this requirement smartphones become a very popular in the market, and इसलिए इनका यहाँ पे इतना डिमांड है। सिमिलरली अगर मैं वैन की बात करता हूँ, राइट, सिमिलर मैं वैन की बात करता हूँ, तो वैन वाज डूइंग ग्रेट, देयर वाज नो प्रॉब्लम इन द वैन। ये बिल्कुल सही से काम कर रहा था। क्या काम कर रहा था वो, क्या चाहिए था काम वैन से? आपको वैन से चाहिए था कि भाई तुम्हारे ऊपर राउटिंग प्रोटोकॉल सही से काम करे, सो द राउटिंग प्रोटोकॉल इज गोइंग टू वर्क, राइट। दूसरा, आपकी ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक मैनेजमेंट होना चाहिए आपका, राइट। द थर्ड थिंग इज लाइक कि योर हार्डवेयर, जो भी हार्डवेयर है, should capable should capable to handle more data, जो उसको थ्रूपुट बोलते हैं, ये करना होना चाहिए। चौथा, आपके पास जो भी आपके हार्डवेयर से हैं उसके इंटरफेसेस जो है, दैट शुड बी द 1 GB, माइट बी द 10 GB, माइट बी द 100 GB, इस तरीके के आपके इंटरफेसेस होने चाहिए। सो डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट वी हैव। सो एब्सोल्युटली इट वाज डूइंग गुड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, राइट। बट कहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम आई कि एसडी-वैन की जरूरत पड़ गई हमें मार्केट में। व्हाट एक्चुअली थिंग्स हिट इन द मार्केट कि हमें एसडी-वैन की जरूरत पड़ गई। तो देखो प्रॉब्लम यहाँ था, जो सबसे प्रॉब्लम ये थी कि जब वैन की यूज करते हैं तो हमारा इस तरह का कुछ आर्किटेक्चर हुआ करता था। जब भी आप वैन की बात करते हो तो देयर वाज आर्किटेक्चर की, जैसे आपकी बहुत सारी ब्रांच लोकेशंस हैं, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ, वी आर ब्रांच 1, इस तरीके से आपके पास ब्रांच 2 हो गया, दिस इज द ब्रांच 3, दिस इज द ब्रांच 4। ये आपके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज हैं जो अलग अलग लोकेशन पे हो सकती हैं। ये सारे ब्रांचेज दो तरह के आईएसपी से कनेक्ट हो सकते थे।
एक आपका हो सकता था MPLS, राइट, और दूसरा आपका हो सकता था माइट बी द इंटरनेट। सो ये सारे ब्रांच इस क्लाउड से भी कनेक्ट होंगे, राइट, यहाँ से ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे, यहाँ से ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे, यहाँ से ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं MPLS की बात करूं तो ये भी सारे इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे। जस्ट मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, डोंट गो ऑन द लाइंस, कैसे आपको ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड वंस दिस ब्रांचेज आर गोइंग टू कनेक्ट इन दिस वे, अब क्या होगा, अभी ब्रांचेज तो कनेक्ट हो गई इस तरीके से, अब इनका ट्रैफिक जाएगा कहाँ पे? सो देयर वाज अ डेटा सेंटर्स। सो मोस्ट ऑफ द केस आपके पास डेटा सेंटर हुआ करता था, और जहां पे डेटा के अंदर सारे आपके एप्लीकेशंस को होस्ट किया जाता है, ऐप होस्टिंग यहाँ होती थी, राइट, आपके सर्वर्स होस्टिंग यहाँ होती थी, राइट। तो बेसिकली दीज ऑल आर गोइंग टू कनेक्ट टू डेटा सेंटर्स राउटर्स, एंड इसके पीछे हमारा लैन नेटवर्क होता था, जिसके पीछे हमारा पूरा सर्वर, जो भी आपका एप्लीकेशन जो भी कनेक्ट होता था, तो दे आर कीप गोइंग वाया द इंटरनेट, दे कीप गोइंग वाया द MPLS, एंड दे कीप कनेक्टिंग टू द डेटा सेंटर एप्लीकेशंस। सो ये पहले चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था। और किस तरीके से काम ये करता था? सो आपको ऑफिस जाना है, एंड वंस यू गो टू ऑफिस, आपको बेसिकली ऑफिस जाने के बाद यू जस्ट हैव टू, आपको ऑफिस जाने के बाद अपने ऑफिस में आपने लैन पे लॉगिन किया, लैन पे लॉगिन करने के बाद आपने कंप्यूटर को आपकी ऑफिस की IP मिल गई, एंड देन इट इज गोइंग टू कनेक्ट टू द वैन नेटवर्क, एंड देन आफ्टर इट इज गोइंग टू लैंड टू द डेटा सेंटर्स। एब्सोल्युटली थिंग्स वर फाइन, इसको हम बोलते हैं वैन, वाइड नेटवर्क। बट प्रॉब्लम कहां पे आई? क्यों इसको वैन को हमें SD WAN में कन्वर्ट करना पड़ा? व्हाट वाज द प्रॉब्लम? सो प्रॉब्लम यहाँ पे आई, जो आप लोग बहुत लेमन में समझना चाहते हो, प्रॉब्लम यहाँ पे आई कि जो क्लाउड का इन्वेंशन हुआ, राइट, क्लाउड की मैं बात करता हूं तो देर इज टू टाइप ऑफ क्लाउड, देर इज अ प्राइवेट क्लाउड, राइट, और एक होता है पब्लिक क्लाउड। अब यहाँ भी एक कैच है, प्राइवेट क्लाउड का मतलब, पब्लिक क्लाउड का मतलब क्या होता है? इफ समवन इज गोइंग टू आस्क व्हाट इज अ प्राइवेट क्लाउड, व्हाट इज अ पब्लिक क्लाउड, तो देखो सिंपल सा डेफिनेशन है। प्राइवेट क्लाउड का मतलब ये होता है कि यू आर द ऑनर, जहां पे जैसे एक डेटा सेंटर को आप एक तरीके से प्राइवेट क्लाउड की तरह ट्रीट कर सकते हो। टेक्निकली दिस इज अ प्राइवेट क्लाउड, जिसमें एक कस्टमर का एक कोई लोकेशन है, वहां पे वो सारी अपनी एप्लीकेशन को होस्ट करता है अपने सर्वर्स के अंदर, और उस एप्लीकेशन को किसी दूसरे लोकेशन से किसी भी तरीके से उसको एक्सेस कर लेता है। दैट इज अ प्राइवेट क्लाउड, मींस डेडिकेटेड टू योर कंपनी, मींस दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट शेयर्ड। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने पीजी में नाम सुना होगा, राइट? पीजी में आप लोगों ने रहा होगा, जिसको बोलते हैं पेइंग गेस्ट। अब इस पेइंग गेस्ट दो तरीके के होते हैं, जैसे एक पेइंग गेस्ट ये हुआ और एक पेइंग गेस्ट ये हुआ, ठीक है? अब इस पेइंग गेस्ट में हो सकता है कि जो ऑनर है उसने 3 कॉर्ड्स को डाल रखा है, ठीक है, 3 कॉर्ड्स को डाल दिया, मतलब 1 2 3, मीन दिस रूम हैज बीन, ये रूम एक रूम है, हैज बीन शेयर्ड विद 3 पर्सन्स, राइट, मतलब एक ही रूम को 3 लोगों के बीच में शेयर कर दिया, मीन्स दिस इज बिकम द पब्लिक पीजी। एंड एक दूसरा पीजी है और इसके अंदर हमारा एक ही कॉर्ट है, दिस इज बिकम द प्राइवेट पीजी, राइट। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? ये रूम जो है दैट इज अ पब्लिक पीजी, इसमें जो बंदा रहेगा ही नीड टू पे लेस, इसको कम पैसा देना पड़ेगा। हो सकता है कि इस पीजी का रेंटल है 10,000 पर मंथ, राइट, ये इसका रेंटल है। इसका भी रेंटल हो सकता है कि टोटल इसका रेंटल पर पर्सन 4,000 दे रहा, 4K ये भी दे रहा, 4K ये भी दे रहा, 4K ये भी दे रहा। ऑनर इज गेटिंग 12K इन अ मंथ, मोर देन दिस, बट दिस हु इज स्टेइंग इन साइड ऑफ दिस पीजी वो तो कम पे कर रहा है ना। सो दिस इज द पब्लिक, मतलब कि आपको पब्लिक चीजें तो सस्ती पड़ती हैं, बट यू हैव द सम काइंड ऑफ द सिक्योरिटी ब्रीच एज वेल, बिकॉज आप अगर शेयर्ड में रहते हो तो हो सकता है कि आप अभी ऑफिस चले गए एंड योर बिलोंगिंग्स आर इनसाइड ऑफ द रूम, तो ये बंदा हो सकता है कि समहाउ कुछ मिसबिहेव कर दे। जनरली ऐसा होता नहीं है, बट देयर इज अ चांस बिकॉज दिस इंफ्रा इज शेयर्ड, तो आपकी थोड़ी सी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, बस चीजें आपकी सस्ती पड़ती हैं। बट जहां डेडिकेटेड है दैट इज गोइंग टू बी डेडिकेटेड टू यू, नोबडी गोइंग टू टच एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू, सो दिस इज अ प्राइवेट। सिमिलरली ये प्राइवेट क्लाउड एंड पब्लिक क्लाउड का ही कॉन्सेप्ट होता है। प्राइवेट क्लाउड मीन्स कि आपका खुद का डेटा सेंटर दैट इज गोइंग टू मैनेज बाय यू ओनली, एंड वंस यू मैनेजिंग दिस डेटा सेंटर, दिस ऑल एप्लीकेशन बिलोंग टू यू, nobody is going to intervene, nobody is going to see what is happening inside of this particular data center, और उससे आपका
एक बेनिफिट ये होता है कि जो भी चीजें हैं दैट इज गोइंग टू बी सिक्योर, बट आपको कॉस्ट यहाँ ज्यादा पड़ता है, सो इट इज गोइंग टू बिकम द कॉस्टली, ठीक है। बट पब्लिक क्लाउड इज वेरी लो कॉस्ट, राइट, इसके अंदर लो कॉस्ट होता है क्योंकि इसकी सारी चीजें शेयर्ड होती हैं। तो पब्लिक क्लाउड के जो प्रोवाइडर हमारे पास हैं दैट इज एज्योर, राइट, हमारे पास AWS है, राइट, हमारे पास GCP है, एंड आप इसको और भी हमारे पास जैसे अलीबाबा, आप थिंक बहुत सारे हमारे पास XYZ प्रोवाइडर्स हैं, बट दीज आर द की प्लेयर इन द मार्केट। सो हुआ क्या कि वंस द पब्लिक क्लाउड हैज बीन डेवलप्ड, मैं ये सारी स्टोरी क्यों बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे रेलिवेंट्स हैं। वंस द पब्लिक क्लाउड हैज बीन अवेलेबल इन द मार्केट, customer start hosting the data from their on private data center to the public cloud data center। मीन्स कि पहले जो हमारा कम्युनिकेशन होता था ब्रांच से, वो अपने डेटा सेंटर तक ही लिमिट हुआ करता था, बट नाउ पीपल स्टार्ट होस्टिंग द एप्लीकेशन फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेंटर जो कि हमारा पब्लिक क्लाउड में है। सो योर एप्लीकेशन आर नॉट होस्टिंग इन द लेगेसी वे, मीन्स आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट मूविंग इन द डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन। सो अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन एप्लीकेशन को मूव करना है तो इट इज वेरी हार्ड टू जस्ट टेक द लीज लाइन फ्रॉम एंड टू एंड, क्योंकि आप तो डूब जाओगे पैसे देते देते ISP को। सो इट इज वेरी हार्ड टू बेसिकली मैनेज दोज लिंक्स, इवन MPLS के लिंक ही आप लेते हो, इट्स वेरी कॉस्टली लिंक्स। तो अगर आपको अगर 10 लोकेशन पे अलग अलग रीजन में आपने एप्लीकेशन को होस्ट कर रखा है, सो इट इज गोइंग टू बी वेरी कॉस्टली फॉर यू टू मैनेज। एंड ट्रस्ट मी, अब एक और इसका एग्जांपल मैं समझाता हूं आपको, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूं आप लोगों को ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। जैसे एक एक आपने एप्लीकेशन होस्ट किया, इस तरीके से समझो आप लोग, जैसे एक आपने एजोर में एप्लीकेशन होस्ट किया, ये एक एजोर का है, जैसे ये एजोर का मेरा है US के अंदर, दूसरा एक मेरा एजोर का ही है, लेकिन ये मान के चलो कि ये अभी इंडिया में है, ठीक है, न्यू दिल्ली में कहीं पर है। अब ये ब्रांच लोकेशन है, ठीक है। अब इस ब्रांच लोकेशन को रियल टाइम में इस एप्लीकेशन का भी एक्सेस चाहिए और इसको भी चाहिए। तो पहली प्रॉब्लम क्या होगी कि आपको इंडिया भी, आपको जैसे आपकी ब्रांच हो सकता है दुबई में आपकी ब्रांच हो, इट्स इन दुबई समवेयर, तो आपको दुबई से इंडिया एजोर के जो हमारा एप्लीकेशन है यहां तक भी आपको बेसिकली एक तरीके एमपीएलएस सर्किट्स लेने पड़ेंगे, और यहाँ भी आपको MPLS सर्किट लेना पड़ेगा यहाँ तक भी। सो इट्स ह्यूज कॉस्ट फॉर यू। सो टेक्निकली ऑर्गेनाइजेशन इतना बेयर नहीं करती है, राइट, क्योंकि इतना पैसा, मैं तो छोटा सा एग्जांपल बता दूं, लेकिन कंपनीज के ब्रांचेज आर लोकेटेड इन द अक्रॉस द ग्लोब, thousands of branch, 10 thousands of branch, just take a TCS an example, ACL as an example, Wipro as an example, कितनी सारी ब्रांचेज इनकी ग्लोबली है। So how they are going to connect these all branches globally over the MPLS by paying a lot of money and by accessing all the application, तो उनके लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है, राइट। सो ड्यू टू दिस सिनारियो, अगर मैं नॉर्मल वैन, अगर MPLS ना लेकर मैं इंटरनेट लेता हूं तो मैं ले तो सकता हूं, बट प्रॉब्लम इज गोइंग टू हैपन ऑन द इंटरनेट इज कि दिस इंटरनेट हैविंग लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। अगर मैं इसको इंटरनेट सर्किट से रिप्लेस कर दूंगा तो मैं साइड टू साइड VPN बना सकता हूं, मैं IPsec VPN बना सकता हूं, लेकिन उसको कॉन्फ़िगर करना, एंड टू एंड ट्रैफिक मैनेज करना, उसको ट्रबल शूट करना, अपने हिसाब से उसको फेल ओवर करना, अगर कल के डेट में ये लिंक डाउन हो गया फॉर सम रीजन और आपको ट्रैफिक को शिफ्ट करना, यहाँ पे इस लिंक में कंजेशन आ गया, आपको यहाँ पे शिफ्ट करना, देन हाउ इट इज पॉसिबल? देयर इज नो पॉसिबिलिटी। मींस आपको बहुत सारे मैनुअल एफर्ट लगाने पड़ेंगे, बहुत सारे नेटवर्क के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा। So due to nature of the changing of the application behavior, due to nature of changing of the application behavior, the legacy WAN was not capable to cater the requirement. अंडरस्टैंड मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आपकी अभी की एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है, जो एप्लीकेशन आर गोइंग टू मूव एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आपकी SaaS बेस्ड एप्लीकेशन है। देखो एप्लीकेशन आपकी किस टाइप की है वो समझो आप लोग पहले। सॉरी कहां गया मेरा, ओके। सो now we having the application, sorry, we having the application SaaS based application hai, right? We are using as a platform as a services, we are using infrastructure as services, right? So these all most of the SaaS application like O365 हमारे पास है, हमारे पास Dropbox है, हमारे पास other cloud applications है, बहुत सारे cloud applications। So these applications are moving anywhere in the globe, different cloud providers। So this was the reason,
This is the key region because of the application are moving in the different locations, and due to that you basically not able to cater the actual routing informations to make them connectivity. अगर कर भी लेते हो that is a very complex for you. Understand? एक रीजन ये हो गया क्रिएट एप्लीकेशन. दूसरा क्या रीजन हमारे पास है कि पहले हमारे पास वर्क करने का जो तरीका था, everyone working from office, but now this has been changed. We are working in the hybrid model. Means some people are working from the office for some day and most of the people are working from the home. So you can see. So अगर आप ऑफिस के अंदर हो तो कैसे आपका नेटवर्क डिजाइन होगा? ठीक है, मैं चलो मान के चलो कि मैंने एप्लीकेशंस को होस्ट कर दिया, एक मैंने एजोर का ले लिया, एक मैंने ले लिया हो सकता है कि AWS का, और एक मेरा खुद का डेटा सेंटर है, मैं मान लेता हूँ जस्ट ये कनेक्टेड मैंने कर दिया, इनको MPLS क्लाउड से भी कनेक्ट कर दिया. चलो मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे पास और भी सर्किट है बैकअप के लिए इंटरनेट का, मैं इनको कनेक्ट कर दिया, जैसे इनको यहाँ से कनेक्ट कर दिया, इनको यहाँ से कनेक्ट कर दिया, इनको यहाँ से कनेक्ट कर दिया, इनको भी यहाँ से कनेक्ट कर दिया, इनको भी यहाँ से कनेक्ट कर दिया, इनको भी. दिस हैविंग अ डुअल रिडंडेंसी. अब मेरे पास बहुत सारे ब्रांचेज हैं, जैसे ये ब्रांचेज है, छोटा सा मैं ब्रांच लेता हूँ, ब्रांच 1 या ब्रांच 2. दिस ऑल्सो गोइंग टू कनेक्ट इन दिस वे, दिस ऑल्सो गोइंग टू कनेक्ट इन दिस वे. अब इन ब्रांचेज को कनेक्ट करना है अपनी एप्लीकेशंस को, दे कैन इजिली कनेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम, दिस कैन बी कनेक्टेड over the MPLS. अगर ये इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो they can switch over the internet, they can do that, but आपको इसके लिए ऑफिस जाना पड़ेगा. Then you are going to get the your LAN network, corporate network, corporate Wi-Fi, corporate LAN, and based on that you can connect the your destination server. But just think about in this way, now you are working from home, you are the work from home user. How it is possible? You are working somewhere from the India, right? You are working somewhere from the US, you are working from somewhere UK, you are working from Singapore, you are working from the UAE, right? Any geographical Germany, any other locations you are working, then how it is possible to connect these all location? Possibility हमारे पास है, ऐसा नहीं है कि possibility नहीं है, कर सकते हैं work from home, there is no problem. We can build the site to site VPN, sorry, client to site VPN, SSL VPN हमारे पास solution है, that is like going to create the tunnel from this particular machine and that is going to terminate it. But the problem is that कि उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी डिपेंडेंसी है, राइट? कि आपकी स्केलेबिलिटी, जो स्केलेबिलिटी कहते हैं जो हम, कि जो आपकी कम्युनिकेशन हो रहा है फ्रॉम द ब्रांच लोकेशन टू डेटा सेंटर, और माइट बी फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, from the work from home user to the your office location to the data center or the cloud provider application, that are not scalable at all. Because अगर आपके 10,000 employee हैं, so they are going to terminate all VPN in the single box, and if this single box is going to be dead, the all traffic is going to switch to another backup box. If that is also going to dead, then how you cater the traffic? Because box having their limitations, and also you have to pay huge money to them, and that box is even not having the all security requirement, which is the modern security, like you know, the cyber security, cyber fraud, lot of vulnerability, lot of malware is happening. So that network is not that much flexible, that much secure. By using that traditional way, we can achieve everything whatever we are looking for. So this was another reason we just need something who just going to mitigate this problem. So that's why we come with the different solution, right? Where we have to come out with some solution, like we come with a SASE solution. This is the secure access service edge. And this SASE concept that was introduced by the Gartner, this SASE solution come with the multiple kind of the component. That is, one is the SD-WAN, GTNA, right, SWG, right, and we can also talk about the firewall as a service, right? So we having the various flavor, but most of the case you will find the SD-WAN is the component, GTNA is one component, secure web gateway is another component, firewall services is another component. So we are not going to talk these all, but if you want to build your secure access service edge for your organization that can be accessed from anywhere,
and you want to access your all application that is hosted from the anywhere, then you have to use the SASE model. And to achieve this SASE, you have to combine your SD-WAN solution, you have to combine your GTNA solution, you have to combine your secure web gateway solution, you have to combine your firewall as a services solution, right? So these all you have to combine, then this SASE is going to form. So one of the component is SD-WAN, who is just helping to just make the SASE possible for the organizations. So it's not like आप एक SD-WAN engineer हो सकते हो, but you are not going to become the SASE engineer. So आपके organization के लिए आप एक तरीके से आप network engineer हो who is going to manage the SAS SD-WAN component. But same time आपके organization में आपके security engineer होंगे जो आपके ये सारे component को manage कर रहे होंगे, right? So if you want to become a complete SaaS engineer, आपको पता लगेगा कि मैं तो SD-WAN engineer हूँ, but how your company is getting the solution to just make sure everything is working fine for your organization, because by leveraging this SASE feature जो आप नहीं काम करते हो, क्योंकि अगर आप network security engineer होते, network plus security engineer, so you are going to understand these all concepts. What is SD-WAN, what is GTNA, what is secure web gateway, what is the firewall services, right? बट बिकॉज आपको डिमार्केशन है कि आपको सिर्फ एसडीएन मैटर करना है, आपको मैनेज करना है, तो यू आर गोइंग टू बिकम द एसडीएन इंजीनियर. बट आप सब जानते हो तो यू आर गोइंग टू बिकम द SASE इंजीनियर. सो for organization point of view, their network is going to be become a SASE, and they are going to integrate lot of component. But for you, you just have to learn about the SD-WAN to support their model, and rest of the things is managed by the security team, right? So this is why SD-WAN is a very key component, and without SD-WAN, you cannot achieve the SASE solutions. And this SASE have is a key goal to just make sure whatever you are doing, whenever you are doing, इट इज गोइंग टू बी फुल्ली सिक्योर. मतलब आप कहां से काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, किस डिवाइस से काम कर रहे हो, किस लोकेशन से काम कर रहे हो, किस एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहते हो, आई डोंट केयर, योर एवरीथिंग इज गोइंग टू सिक्योर. दैट इज अ मेन की फंक्शन ऑफ द SASE. और उस SASE में सिक्योरिटी को जो मेंटेन करने के लिए और आपका एक डाइवर्स नेटवर्क जो एप्लीकेशन दैट शुड बी वेरी ऑप्टिमाइज वे में, जो आपका चारों तरफ ग्लोबली लर्न होना चाहिए, जिसमें के अंदर आपकी सिक्योरिटी इंटीग्रेटेड हो, स्केलेबल नेटवर्क हो, कॉस्ट सेविंग हो, रिलायबल हो, रेजिलेंसी हो, सेंट्रल मैनेजमेंट ऑपरेशंस हो, ऑर्केस्ट्रेशन हो, वो सारी चीज को अचीव करने के लिए आपको SD-WAN को इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा. सो दिस इज हाउ वी कैन कम विद द SD-WAN solution. Any question till now? Anyone have anything to ask? Let me know. If you feel any question, just raise your hand. अगर आप mute नहीं कर पा रहे हो तो. Anyone have anything to ask? I'm talking about last 30 minutes. No, sir. We don't have any issue. All right. So let me give some kind of the roadmap what we are going to learn in this SD-WAN. So I just give the idea, right? We have to go in a very long journey, right? I just wanted to show a lot of things, but I believe it required a lot of time to show everything. So this is a Cisco official, you can see sites. They are talking about the Cisco SD-WAN solution. Sometime you will find now it has been renamed as a Cisco Catalyst SD-WAN. So someone is talking about the Catalyst SD-WAN. You don't have to worry about at all. Catalyst SD-WAN is the same Cisco SD-WAN with Tela SD-WAN. This is the same meaning is going to be happen. What they are talking, smart, simple and secure. Meet the new networking. This is your SD-WAN solution. They are talking smart, simple and secure. Why it's a smart? Likewise, I told about the phone was become smart because you give the lot of intelligence in that phone. Earlier phone was not smart. They were the phone, वो भी phone था. We can do the call, we can do the video calling, we can do a lot of things, but that was not smart. उसके अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं था, ऐसी उसके हार्डवेयर आर्किटेक्चर नहीं था कि जो आपको मल्टीटास्किंग कर सके. So this is that's why your WAN become the smart, because उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर डाला गया. That software is going to be handle very robust data processing. एक हार्डवेयर है जिसके अंदर बहुत अच्छा प्रोसेसर है, सो जिसकी वजह से आपकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा इनहेंस करता है. सिंपल, बिकॉज इट्स वेरी यूजर फ्रेंडली. लाइकवाइज आपके पास दो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक आपके लिनक्स का है, एक आपके विंडो का है. सो विच वन इज सिंपल, यूजर फ्रेंडली? You can just always go and say Windows is always user friendly, Linux is always complex to use, right? Simple, secure means it is going to give the security, and that is become your new SD-WAN networking solution. And that's why they are talking about, see here, SASE, secure service edge as well. So we are talking and targeting one component because we are learning the SD-WAN, but they are talking about connect any user, any application.
anywhere. This is a tagline. Means any user, any application from anywhere. That's the SASE solution. Harness integrated multi-cloud capabilities, robust security and predictive intelligence to let your network handle the heavy lifting, build your path to secure service edge, that is SASE architecture, that solid foundation of the Catalyst SD-WAN. So without this SD-WAN solution, you cannot achieve this SASE, and SASE having the multiple components. So they are talking a lot of things, how they are going to simplify your WAN management, build the network, you need, you know, to make your life easy, connect your way, enjoy the production of the industry leading security, and we are talking going to more, but this is how they are talking. Now in the GuiNet we having the very robust lab, right? You can see here this lab is going to fully configured from the scratch. Trust me, from zero to hero, right? We are going to learn everything about this particular SD-WAN solution कि यहाँ पे हम start करेंगे from zero, where we'll understand how this SD-WAN is going to be configure, how the controller is going to be built, how the branches are going to be connected, what is the meaning of the dual transport, how the internet site is going to be connected, how the MPLS site is going to be connected, how the data center is going to build, right? How the resiliency is going to be provided, how the CH is going to be configured, how the different VH is going to be onboarded on the different MPLS and internet providers. Failover, controller management we are going to understand, vSmart, vBond, vManage, right? VS devices. So everything we are going to do the lab testing, right? So I'll just delete everything. कुछ भी इसमें नहीं रहेगा आप लोगों को, and we'll just cover from the scratch. ठीक है? So you can just think about it. So we'll do, and बहुत मजा आने वाला है, right? Now, if I talk about the content, so if I just move about that, the official content of the Cisco, what we are going to cover throughout this journey. So let me just go Cisco SD-WAN syllabus. So let me just go here. So whatever the official syllabus we have, right? So if you guys are planning for the exam, right? So this is the exam code of Cisco SD-WAN 300-415 ENSWI, right? Implementing Cisco SD-WAN solution. This duration is going to be 90 minutes. This exam can be given in the English and Japanese. You have to pay 300 US dollar, right? Plus taxes, right? And you can schedule this exam. So अगर आप लोग exam देना है, you always go and book your exam. And if you want to review the exam topic जो हम cover करने वाला है, full syllabus of the Cisco SD-WAN, and trust me, none of the topic is going to be untouched throughout the journey. So जो भी इसमें Cisco you're going to given even going to get more, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लाइव करते हैं, so we have the expertise, but आप लोगों को शायद सिलेबस में नहीं मिलेगा, so I'll try to pull those basically पॉलिसीज के बारे में, लोकलाइज पॉलिसी, सेंट्रलाइज पॉलिसी जब हम पढ़ेंगे, जो एक्चुअली इसका इंजीनियरिंग है, ब्रेन है, that we are going to understand in very detail. So you can see here, even you can download this PDF file. Let me just paste it so you guys can understand later stage how this, let me just put it here. So you can see architecture. So in this architecture, they are talking the first section, and this is the first section is a very important section. First, we have to understand very theoretically why this architecture है. मैंने तो अभी तक कुछ भी बात नहीं की, जस्ट मैंने तो आपको छोटा सा एक ट्रेलर दिया है, बट व्हेन वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कैसे SD-WAN का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, राइट? क्या क्या इसके एडवांटेज है, क्या क्या इसके डिसएडवांटेज है, लेगेसी WAN में क्या क्या चैलेंजेस है, मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा अभी, क्योंकि हमें बहुत अभी लंबा, क्या पुराने राउटर में कैसा हमारा कम्युनिकेशन होता था, कैसे नया राउटर का हमारा एवोल्यूशन हुआ, कैसे SD-WAN आर्किटेक्चर आया, देन विल गो स्लोली एंड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंपोनेंट. ठीक है? Give me one second. For that, you just have to understand architecture, SD-WAN architecture. What is architecture of the SD-WAN? So describe the Cisco SD-WAN architecture and this is the component. So theoretically, you just have to understand कि vBond हमारा क्या होता है, orchestration plane क्या होता है, management plane क्या होता है, control plane क्या होता है. See, these are the documentation. So orchestration plane, management plane, control plane, data plane. So full have the agenda, full have the documentation. So कुछ भी आप लोग टेंशन की जरूरत नहीं है, पूरा Cisco का official documentation we have, right? एंड हम उसी के साथ पूरी अपनी लर्निंग करेंगे, राइट? देन आपको कंट्रोल प्लेन में आपको सीखना पड़ेगा व्हाट इज अ वी स्मार्ट, व्हाट इज अ टी लॉग, व्हाट इज अ वी राउट, व्हाट इज अ डेटा प्लेन, व्हाट इज IPsec टनल, हाउ द GRE टनल इज गोइंग टू बिल्ड, व्हाट इज अ BFD मल्टी रीजन फैब्रिक, सिस्को SD-WAN
प्लेटफॉर्म एंड कैपेबिलिटीज के बारे में डिस्कस करना है, देखो ये सारी सर्विसेज भी डिस्कस करना है आपको। SaaS ऐप क्या होता है, एज क्या होता है, कोलोकेशन क्या होता है, मल्टी क्लाउड एंड इंटरकनेक्ट कम्युनिकेशंस क्या होते हैं, दैट वी आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड. So this architecture is more about the theoretical, right? But most important to crack your interview. Trust me, this architecture is going to take a lot time. I can say 1 week or 1.5 week, because this is going to be happen Monday to Friday. So we just have to give at least 7 to 8 hours to just understand this all concept minimum. Then it is going to be very clear about the every component. T-lock क्या होते हैं, V routes क्या होते हैं, OMP क्या होते हैं, V smart क्या होता है, V bond क्या होता है, V manage क्या होता है. क्योंकि आप लोग अभी just I'm thinking you guys are all having the very limited knowledge about the SD-WAN. That's why you guys joined here, right? And आप लोगों ने WAN में अभी तक काम किया है, तो आपको इस बारे में पता होना चाहिए. Without knowing, like हम कैसे इसको complete कर सकते हैं. Once you understand the आर्किटेक्चर, देन यहाँ पे आपका देखो 20% वेटेज है. ट्रस्ट में 20% वेटेज आर्किटेक्चर, क्योंकि आपको 80% इंटरव्यू तो यहीं से आएंगे. जब ये आपका आर्किटेक्चर क्लियर है, देन इट्स कम टू द कॉन्फ़िगरेशन. कैसे आप कंट्रोलर को डिप्लॉयमेंट करोगे. सो बिल्कुल कंट्रोलर डिप्लॉयमेंट का जीरो से बताऊंगा कि एक एक कंट्रोलर को डिप्लॉय करके वी मैनेज कैसे डिप्लॉय होता है. वी वांट बिल्कुल कॉन्फ़िगरेशन भी हम करेंगे, एंड वी हैव द प्रॉपर लैब गाइड एज वेल, राइट, जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे इस तरीके से एक एक स्टेप करके वी मैनेज, वी बॉन्ड, वी स्मार्ट एंड रूट्स, ये सारे का मतलब क्या है, क्यों इसको हम डिप्लॉय करते हैं, कैसे ये कनेक्टेड होता है, और किस तरीके से हमारा कंट्रोलर फिर फाइनली डिफरेंट डिफरेंट साइट लोकेशन को ऑनबोर्ड करता है. सो दिस विल गोइंग टू अंडरस्टैंड इन द कंट्रोलर डिप्लॉयमेंट. तो इसमें देखो इसके अंदर कंट्रोलर क्लाउड में कैसे डिप्लॉयमेंट होगा उसको हमें समझना है, फिर कंट्रोलर ऑन प्रेमिसेस में कैसे डिप्लॉयड होगा. ठीक है, इसको आपको सिर्फ थ्योरी के बारे में बात कर रहा है सिलेबस में, राइट. बट वी विल डिप्लॉय इन आवर सिनारियो, क्योंकि हमें लैब बिल्ड करना है. देयर इज नो talk about the deployment of the controller in the lab environment, because in might be in your scenario it is going to fully deployed. आपकी कंपनी पहले से डिप्लॉय करके रखेगी, बट दिस इज गोइंग टू बी नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस, बट हम इसको करेंगे. फिर इसमें बोलते हैं कॉन्फ़िगर सर्टिफिकेट एंड डिवाइस लिस्ट. तो ये सर्टिफिकेशन एंड डिवाइस लिस्ट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर रहे हैं. ये तो हम करेंगे ही करेंगे, कंट्रोल डिप्लॉय करेंगे. स्क्रैच से सर्टिफिकेट कैसे होता है, डिप्लॉयमेंट कैसे होता है, ट्रबल शूटिंग, कंट्रोल प्लेन कनेक्टिविटी कैसे होती है, व्हाट इज DTLS, TLS टनल कैसे होता है, IPsec टनल क्या होता है, BFD टनल क्या होता है, आपको OMP टनल क्या होता है. ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आफ्टर डूइंग द कंट्रोलर डिप्लॉयमेंट. दिस इज सेकंड मॉड्यूल. देन विल मूव टू द थर्ड मॉड्यूल, जहां पे राउटर डिप्लॉयमेंट करेंगे. राउटर डिप्लॉयमेंट क्या हुआ हमारा, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच के राउटर्स है. दैट इज अ VH, CH. देखो ये VH है, यहाँ पे CH है, सिस्को एज, विप्रेला एज. इसका मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा आप लोगों को. एंड देन दिस इज गोइंग टू बी डिप्लॉयड. एंड इसके अंदर देखो आपका राउटिंग भी समझने को मिलेगा. VRRP कैसे कन्फिगर होगा, OSPF कैसे होगा, BGP कैसे होगा, EIGRP कैसे होगा. ठीक है, जीरो टच प्रोविजनिंग क्या होती है, डेटा सेंटर एंड रीजनल हब डिप्लॉयमेंट क्या होता है. देखो हमारे पास एग्जैक्ट टोपोलॉजी, हब है हमारे पास, ये हमारे पास कंट्रोल प्लेन का है, ये हमारे डेटा सेंटर हब की तरह काम करे, ब्रांच लोकेशंस हैं. तो ऑलरेडी इट्स पार्ट ऑफ रैप. सर्किट टर्मिनेशन, T-lock एक्सटेंशन क्या होता है, इट इज ऑल्सो गोइंग टू हैपन, T-lock एक्सटेंशन इन आवर लैब्स. सो डायनेमिक टनल कैसे बनती है बताऊंगा मैं. अंडरले ओवरले कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, OMP क्या होता है, कैसे कन्फिगर होता है, T-lock कैसे कन्फिगर होता है, मल्टीकास्ट का मतलब क्या होता है, इसके बारे में सीखना है. डिस्क्राइब कन्फिगरेशन ग्रुप फीचर एंड प्रोफाइल नेटवर्क फ्लो, ये सारी चीज समझनी है हमें. तो वो सारी चीजें आपको जैसे जैसे हम लैब करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी वेरी क्लियर. ठीक है. देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आफ्टर राउटर डिप्लॉयमेंट, कंट्रोलर डिप्लॉयमेंट, अंडरस्टैंडिंग द आर्किटेक्चर, ये पॉलिसीज. ट्रस्ट मी, दिस इज द क्रस ऑफ द SD-WAN. अब बहुत लोग बहुत कुछ सीख जाते हैं, बट व्हेन टर्म ऑफ द पॉलिसी दे ऑलवेज सफर. पॉलिसी और यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये जो आप दो तरीके की कन्फिगरेशन होती है हमारे SD-WAN में. एक होता है हमारा CLI कन्फिगरेशन, मैं लिख देता हूँ, जिसको बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस. एक हमारे पास होता है GUI कन्फिगरेशन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको हम बोलते हैं कन्फिगरेशन वाया द टेम्पलेट. सो CLI तो फिर भी लोग कुछ कर लेते हैं, लेकिन जहां पे टेम्पलेट से बात आती है, टेम्पलेट से कन्फिगरेशन करना, पीपल आर कंफ्यूज्ड. सो आई विल मेक योर लाइफ वेरी इजी. मैं क्या करूंगा, पूरी लैब पहले CLI से करके आपको सिखाऊंगा कि हर एक CLI का मतलब आप समझो, एंड देन हाउ दिस CLI इज गोइंग टू कन्वर्ट इट इन द टेम्पलेट. ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वेरी इजिली. दिस इज माई कमिटमेंट. कि जैसे ही आप राउटर CLI, आई नो पीपल आर कमिंग फ्रॉम द CLI बैकग्राउंड एंड दे हैव टू अंडरस्टैंड दिस GUI. सो उनको पहले पता होना चाहिए कि पहले CLI में कैसे कॉन्फ़िगर होता है, एंड दिस CLI हाउ कन्वर्टेड इन द टेम्पलेट, जो हमको बोलते हैं फीचर टेम्पलेट और डिवाइस टेम्पलेट, और वो टेम्पलेट कैसे क्रिएट होता है, कैसे हम बनाते हैं. सो आई विल मेक दिस वेरी इजी फॉर एवरीवन.
सो ये चीज हम समझेंगे. देन दिस इज गोइंग टू बी पॉलिसीज. पॉलिसी देखो आपके पास कॉन्फ़िगर द कंट्रोल पॉलिसी, कॉन्फ़िगर द डेटा प्लेन पॉलिसीज, राइट. एंड टू एंड सेगमेंटेशन, वीपीएन सेगमेंटेशन टोपोलॉजी. ये पॉलिसी में आप लोगों को बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगा. लेट मी शो यू समथिंग, माइट बी, लेट मी सी इफ इट इज स्टिल कॉन्फ़िगर और नॉट. एक पुरानी लैब में देखता हूँ कि इट इज कॉन्फ़िगर्ड और नॉट. कहीं उड़ तो नहीं गई कॉन्फ़िगरेशन. लेट मी सी. I'm trying to log in the lab. I believe there is no configuration. Somehow it's erased, right? क्योंकि इसके size मुझे बता दिया. So there is no configuration. This device is fully new. Let me see. This is a vManage. Vbond. Let me open any devices. Let me see if any is working. Yeah. So let me log in it. Default username and password is admin. So see, there is no configuration. That's why it's asking to set the password. So मेरे को password set करना पड़ेगा. So configuration somehow erased, right? There is no configuration. तो अभी मैं इसको इंटर करूंगा पासवर्ड, तो पूरा फॉर्मेट करने को बोलेगा वी मैनेज को. एंड जो देखो ये बोल रहा है ना कि यू हैव टू डिफाइन द स्टोरेज, और इसको फॉर्मेट करना आपको. तो मैं नहीं करूंगा अभी, क्योंकि हम जीरो से इसको कन्फिगर करेंगे बिल्कुल आप लोग के साथ. देन आई विल शो यू हाउ इट इज गोइंग टू हैपन. सो देयर इज नो कॉन्फ़िगरेशन एट ऑल. बिल्कुल नया है. इसी तरीके से वी बॉन्ड है. वी बॉन्ड जो बेसिकली होता है इसके अंदर ही में जो हमारा वीएच का ही होता है. So you can see there is no configuration at all. So run configuration चला रहा हूँ तो बिल्कुल खाली है. So we'll see how the VPN configuration is going to happen. VPN 512 का मतलब क्या होता है, OMP क्या होता है, तो कोई भी configuration, just basic configuration is there जो आपके राउटर में अवेलेबल होता है. So we'll see from scratch. तो ये सारी पॉलिसी जब हम बताएंगे तो we'll understand in very detail how the policy is going to configure, what is the meaning of this policy, and then after we'll move to the QS, quality of service, right? How the QS is going to be configured, right? Again see, सिक्योर वेब गेटवे, सिक्योर इंटरनेट गेटवे, सिक्योर वेब गेटवे इसको बोलते हैं हम लोग. डीएनएस सिक्योरिटी, आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि इस इट्स ऑल अबाउट सिक्योरिटी. सिक्योरिटी में आपको ज्यादा कुछ सीखना नहीं है, कॉन्फ़िगर नहीं करना, बट आई विल गिव सम यूज केसेस. कैसे यूआरएल फिल्टरिंग आप कर सकते हो, कैसे आप आईपीएस इंजन इंटीग्रेट कर सकते हो, कैसे आप कोई फायरवॉल रूल बना सकते हो एसडीवैन के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा करके. ठीक है, एक दो यूज केस बता दूंगा, बट मोस्ट ऑफ थिंग आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एडवांस मालवेयर प्रोटेक्शन कैसे काम करता है, एएमपी यूआरएल फिल्टरिंग कैसे काम करता है, आईएसपी. सो आई एम द लाइक द इंस्ट्रक्टर ऑफ दिस फायरवॉल टेक्नोलॉजी एंड Zscaler as well, so I know like how it is going to work. So this all basically going to cover ट्रस्टसेक का मतलब क्या होता है, मैक्सेक का मतलब क्या होता है, एसएल टीएलएस प्रॉक्सी क्या होता है, एडवांस मालवेयर प्रोटेक्शन मैंने बताया आपको, एंटरप्राइज फायरवॉल कैसे काम करता है, डीएनएस सिक्योरिटी क्या होती है, सिक्योर वेब गेटवे और सिक्योर इंटरनेट गेटवे क्या होता है, क्यूएस कैसे कॉन्फ़िगर होता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप काम करता है, राइट. फिर हम बात करेंगे कि भाई एप्लीकेशन क्वालिटी एक्सपीरियंस कैसे, टीसीपी ऑप्टिमाइजेशन होता है, डेटा रिडंडेंसी क्या क्या मतलब, पैकेट डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड एरर चेक करेक्शन का मतलब क्या होता है, ऐप नैप का मतलब क्या होता है. सारी चीजें हम थियोरेटिकली समझेंगे, इन सारे का मतलब क्या होता है, राइट. सो इसमें हम कीबेस की पूरी लैब करेंगे. थोड़ी बहुत हम फायरवॉल की मैं बता दूंगा आप लोग कैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है. एंड देन वी अंडरस्टैंड वेरी डीप डाइव अबाउट द कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि अगर आप लोग इन फ्यूचर फायरवॉल या Zscaler आप लोग अंडरस्टैंड करते हो तो यू गाइस आर गोइंग टू अंडरस्टैंड what is the key behind of this particular technologies, right. So ये हमारा, then we'll move to the last section, that is the management and operations. And this is like very important for the any kind of the NOC and SOC engineer. So basically why it is very important for NOC SOC, उस टाइम आप NOC SOC इंजीनियर को भी आप लोग वी मैनेज एक्सेस मिल जाता है, SOC इंजीनियर को भी, तो दे आल्सो हैव टू डू सम काइंड ऑफ ट्रबल शूटिंग. कि भाई ऑथेंटिकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग ये तो आप कर ही सकते हो ना, कि भाई वी मैनेज पे लॉगिन मैंने कर लिया और कोई मैनेजर ने रिपोर्ट मांगा, सो वी कैन गिव दैट रिपोर्ट, राइट. कैसे आप सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते हो, यू कैन डू दैट फ्रॉम वी मैनेज, बहुत आसान होता है. मैं बताऊंगा इसके भी फीचर्स कैसे कैसे होते हैं. कैसे आप कॉन्फ़िगर करते हो ऑथेंटिकेशन मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा आप लोग को. रेस्ट एपीआई का मतलब क्या होता है, कैसे हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, विल अंडरस्टैंड द डिफरेंट डिफरेंट यूज केस ऑफ रेस्ट एपीआई. कैसे हम पोस्टमैन टूल से भी इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, राइट. क्या क्या हमारे पास एपीआई कॉल्स होती हैं, कैसे हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, कैसे हम कॉन्फ़िगरेशन डिलीट कर सकते हैं, कैसे हम कॉन्फ़िगरेशन रिट्रीव कर सकते हैं एपीआई के थ्रू. सो दीज विल डिस्कस एंड अंडरस्टैंड.
So this is the overall all syllabus of this Cisco SD-WAN, which is going to be covered, and we'll understand each and everything about this particular format of this exam. Any question, guys? Anyone have? कुछ किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है तो बताओ आप लोग. Yeah, I have a question regarding the lab. You will Yes, sir. provide access for the lab, right? Yes, the So, lab will be there. Yeah, lab will be there, definitely going to be accessed from anywhere. yeah. So you will do the configuration, or we will access and do the configuration as well? No. So this is the lab which I'm accessing, right? This is going to access by me, and I'll configure each and everything on this lab. But you will going to get the simple means same topology in your lab, which is the fully without any configuration. Means that is not going to configure any single line. So it's an empty lab you are going to get. So whatever going to I am explain in the classes, you have to make a note. I'll provide the lab guide also, and you just have to follow my instructions, follow the video, recording will be there, and then you have to configure your lab by your own. I'm not going to configure, I'm just going to show. In case you have any challenges, any problem, you can showcase in the class, you can ask the question, and I'll help you to make them happen. Okay, Aj? For how long? Yeah, any Ayaj, any other question? You okay? Can you hear me? Yes, little bit breaking in between. Yeah, okay. How long the access will be provided? Yeah. Lab access. That is minimum 2 months, right? But if you feel like I need 15-day extensions, you can talk to the Abhishek sir. He will provide that. There's no problem. So Okay. in a day there is a limitation of the timing. No, the you lab can access. you can access 24/7. There's no limitations. Okay. Yeah, you can access 24/7 anytime you have a time. Your credential will be with you. You can do your lab access anytime. Okay. So the way you will be provided. Yeah, your voice is not very clear to me. Can you just put your chat if possible? Voice is breaking. Let me put at the chat. Yeah. Please put your chat. Please put your query in chat. Let me see. And one more thing, if suppose after completing my training, Mm-hmm. if I require the lab access for 1 month or 2 months, so is that possible to Yes, provide us? it is possible. You just have to reach out to Abhishek sir. He will help you, guide you how it is possible. Let me paste the number so you guys can Yeah. connect with him. Okay, so let me put support. So you can reach on this number for any kind of clarification, right? And you can just yes, video will be provided after each lecture, right? No, there is no bulk. So daily basis, once class is done today, so next day we'll get the video access because it's going to take 24-hour processing time because it's going to store in the cloud. So we have to download and we have to upload. So video will be provided on the daily basis, but not same day, next day. Okay, so today recording also we will Yes. get. Today recording also saved and it is going to be available. Yeah. All right, so I believe this is just the introduction session today. We just start. Initially, I start very slowly, so I'm not going to take a lot of time because if I put a lot of theoretical stuff to you, then it is going to be undigestible. So we have to understand very basic thing initially in one and a half week. That's my recommendation, and always I do that because until हमें थ्योरी नहीं समझ में आती है, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, तो मतलब ओवरऑल आप लोग कॉन्फ़िगर तो कर लोगे लेकिन आप लोग को लॉजिक समझ नहीं आएगा. सो माय रिकमेंडेशन, स्लोली विल गो बट विल अचीव आवर टारगेट. ठीक है, so that's all for today. We'll connect again tomorrow at the same time. Okay, any question or we are good to close this? Yeah, okay. Yeah, please go ahead. Yeah, okay. So classes will be from Monday to Friday, right? Yes, probably we'll do Monday to Thursday 4 day in a week. Okay. Okay, not 5 Got days. I'll give the luxury 3 days off. Okay. That's right. Yeah. Right. All right. Okay. All right. Thank you so much, everyone. See you again. Okay. Okay. Thank you. Thank you for your Thank you, time. guys. Thank Great you. session. Thank you. Bye. Bye bye. Okay. Thank you. Bye. Bye.